Guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders. So we will start with the Nifty analysis, and in this Nifty analysis, we will see what's our view for the Fridays, and the weekend is the last day. Okay, so Friday is tomorrow is the last day, and also the monthly closing will be on Tuesday. Okay, so we have to see on Tuesday also. There is one holiday, so for that Monday will be the last trading session of this month, and the last candle will be made on Friday. Oh, sorry, Monday. Now we will start with the Nifty analysis. First of all, you have to see what is the current weekly time frame. Nifty have made a bullish candle. Okay, we will zoom it, and you have to figure it out. What's the Nifty saying currently at this level? Currently, the Nifty candle is green. Okay, we have made a green candle, and you have to see this that this is the first signal after 4 weeks we are getting one green candle in the weekly time frame. The main important thing is whether this candle is closing tomorrow as a green candle or red candle. Okay, if it is closing as a red candle, then that will be a very bad scenario for this upcoming week again. Otherwise, we will can say that this can take a small pullback for next week, and again we can fall और वी कैन राइज फ्रॉम दिस एरिया. बट फिलहाल हम इसको देखेंगे कि निफ्टी में जो ग्रीन कैंडल है वो हमारा अपसाइड बुलिशनेस को कंटिन्यू करेगा. ओके, अनदर थिंग हियर इट इज कि जो लास्ट गैप था, द लास्ट गैप एरिया विच वाज remaining, it has been filled by this candle also. So two important things currently to be noted here. First is the green candle, and the second is the with green candle on weekly time frame, and the second is the gap has been filled. Now there is one still gap pending. This is the gap. Okay, so tomorrow if the market still continues, कि जो bulls हैं, the bulls who are tried, जो हमेशा से मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे थे यहाँ इस फ्रॉम दिस डिमांड एरिया, इफ दे अगेन come in dominance, so we will close again above this level. Otherwise there can be possibilities, can be inside candle also. There can be possibilities that this gap can be also filled on the weekly time frame and also on the daily time frame also. Okay, so this is the Nifty analysis for the tomorrow, and you have to make this gap as a important zone, and the area for this is that this low is very important. If this low breaches, then there are more possibility then we can show back down, because this is the last three consecutive candle was this green candle. Again we have made two candles green. So if the market follows the last same pattern again the last time, so again there can be possibility of green candle, because always the price follow a higher high. You can see no low has been broken from the last 3 days. Okay, so this is the Nifty view for this tomorrow, and now we will see the next one, which is the our favorite, that is gold. Currently gold is the scenario where we are seeing some weakness. Okay, you can see here जो गोल्ड में हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट जो बेस था, या फिर आप कह सकते हो जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जहाँ से पुल बैक लिया, आफ्टर दैट मार्केट टेक शार्प फॉल, एंड आफ्टर शार्प फॉल हमें मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलेगा, बिकॉज ये ब्रेकडाउन के बाद ये थोड़ा सा रीटेस्ट कर रहा है. अगर ये रीटेस्ट में फेल हो जाता है देन हमें गोल्ड कैन बी पॉसिबल, हमें और लोस पे मिलेगा गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम पे और ऑल्सो डेली टाइम फ्रेम पे. गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम अगर आप फोकस करोगे तो एक थोड़ा सा बेरिश कैंडल में ही है. ठीक है, अभी डोजी 15 दैट इज ऑन द ग्रीन टाइम फ्रेम. ओके, दैट इज अ ग्रीन डोजी. अगर इस ग्रीन डोजी को क्लोज करना है, इफ ग्रीन डोजी वांट्स टू क्लोज बाय दिस एज अ स्ट्रॉन्ग, so it should close above this level, that is 44,500. अगर वीकली क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर होता है, ठीक है, दिस क्लोजिंग फॉर टुमारो, देन गोल्ड विल बी बुलिश फॉर द नेक्स्ट वीक ऑल्सो. अदरवाइज ये थोड़ा सा बेरिशनेस रहेगा, देन यू हैव टू मेंटेन अ सेल ऑन राइस
instant in gold. ओके, फिलहाल अभी हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं अपना व्यू कि जो गोल्ड में बन रहा है कि क्या गोल्ड अगर इस लाइन के नीचे जाता है, जो करंट जो लास्ट स्विंग है, ओके 1,36,000, इस लाइन के नीचे ही वीकनेस होगा। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज एक्शन वी कैन पॉसिबल कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन देखने को मिले। सी डेली मूवमेंट आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, ऊपर गैप अप गैप डाउन करेंगे। इसमें क्या होगा कि जब पीपल दोज हु हैव मेड पोजीशन हेयर, दे विल बी कंफ्यूज्ड, द रिटेलर विल बी कंफ्यूज्ड, वो ऊपर गैप अप कर लें या गैप डाउन का, एंड ऐसे जगह पे पोजीशंस मार्केट क्रिएट कर देंगे कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। तो अनलेस वी डोंट हैव एनी क्लियर ट्रेंड, डोंट ट्रेड इन गोल्ड। ओके, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिल्वर। सिल्वर में भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो सेम सिनेरियो ही दिखा रहा है आपको। ठीक है, जो लास्ट इम्पॉर्टेंट बेस था, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बेस या कह सकते हो सपोर्ट एरिया, लास्ट सपोर्ट एरिया वाज दिस ओनली। ये सपोर्ट एरिया ब्रेक होने के बाद आपका market have made this lows broken, and we are trading closing below this support from the last 3 days. Okay, if you will see these candles, the last three means three candles have been closed below this area. Still today again, if it is closing or tomorrow also closing, so can be possible कि हमें more loss देखने को मिल सकता है। Otherwise we will say a sideways action due। वीकली कैंडल इसका भी सेम टू सेम सिनेरियो बना रहा। ओके, इट शुड बी क्लोज्ड अबव दिस। अगर कल वीकली लास्ट डे है, 2,28,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 2,27,000, देन सिल्वर भी बुलिश फॉर दिस शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। अदरवाइज सिल्वर यहाँ पे एक कंटिन्यू करेगा वीकनेस के साथ, एंड द सिल्वर कैन बी पॉसिबल अ साइडवेज टू अ सेल ऑन राइज व्यू ऑन अ सिल्वर। ओके, नाउ वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट आवर क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में जो पोजीशन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखोगे तो वीकली एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? दैट द लास्ट ग्रीन कैंडल विच वाज मेड ऑन द लास्ट वीकली कैंडल ऑल्सो, एंड अभी यहाँ पे जो प्रीवियस ये जो करंट ग्रीन रेड कैंडल है, लो साइड की लिक्विडिटी मीन्स व्हाट, दे हैव हंटेड द लिक्विडिटी ऑफ द लास्ट 4 days, and now they are trying to close it upside। okay, for that market have to close above this level, otherwise they won't be able to close. If tomorrow crude is not closing above this level, then that will be a means this area should be for the crude oil 9200 should be the uh, important resistance for this crude। okay, if this breaks, then crude can go up to 10,000 and also can break this high। so this is an important support। let's see, currently the crude is being seen as a bullish sentiment in a short term, because we are not seeing this, or we can say also a sideways duration। see, unless if you want to neglect crude, then you can neglect, otherwise we can postpone to this targets also, possibilities are there, and this area is called a inside bar। okay, this all candles are inside candle, these inside candles are very much confusing, sometimes they are not able to trade, they don't want us to trade, so you have to be remain cautious, make your quantities ka size low in crude oil, and follow the clear trend only। okay, so this is the view for the crude oil, and the weekly candle is also a can be a recovery candle। so tomorrow is a gameplay for crude, if it is going upside, so this same candle will be made as a green doji, and they will be, it will be like this। okay, so this is the view for the gold, silver, and crude and Nifty। Okay, and crude, natural gas, you all know, we have already given the view, so that's why we will not discuss. Otherwise, we should have discussed. Okay, so this is the view for the Friday. Thank you. Bye bye, guys. Have a nice and good night. Take care.